Okay, in our last lecture, we have completed these details. That is, what is automata, what kind of questions that might come, what is the finite automata, what is how to convert a regular language to DFA. Now, again, we will say starting talk towards now, we'll be talking about this one. Let us say NFA to FA, that is, sorry, regular language to NFA. Okay, non-detailed. It is pretty much easier than that is what you can call than converting to DFA. DFA, it has some restrictions, but NFA doesn't have any restrictions. And then again, we will start talking about today about these topics. That is, 1 second, please. Okay, so we'll be talking about languages. So this is language to NFA, and then we'll talk about how to, we'll talk about a brief about DFA minimization. And again, we will be talking about, before DFA minimization, we'll be talking about language acceptance. And by DFA and by both, that is a finite automata. DFA, that is deterministic finite automata, and again a non-deterministic finite automata. And then again we'll try to resolve the issue of, because you see NDFA can move from one state to other using no input at all, right? That is using Lambda transition. Try to solve Lambda transition. That is the without any input, how to create. And then again we will be trying to convert a NDFA to again what you can call DFA. And again this Lambda transition will again come back in here, right? So in this part will be coming back to in here. Okay, so this let us say we'll see starting all these things. So is it visible, right? Okay, so the thing is, so let us go about this one. We think we have stopped it in here. So we have completed this one. So you see that there are multiple ways different languages are converted into finite automata, right? So let us say initially what we generally do to create a, let us say, to complete a language. So what you can call in here. So again, we'll talk some examples on of languages to deterministic finite automata. Okay. So when you talk about this one, so what is the algorithm to do that one, right? So at least we have to find the valid and the invalid strings from the given language. So if you are given a language, you have to calculate what are the valid and invalid strings. Then you start designing the DFA for the minimum valid string, right? That is if the length is n, so the number of states will be n plus 1. And do the transition for the remaining steps as follows. Check for loop, next state, previous state, dead state. What's the dead state? That is there is no part to the final state, and set loop for all symbols of the input alphabet. Now there is a new final or a non-final state. Now check whether a DFA is completed or not, right? So again, we will start with this one. Design a DFA that accepts strings such as it starts with 1, right? So all the strings which will start with 1. So 1W, where W belongs to, and that is sigma, sigma star, where sigma is equal to 0 and 1. So valid strings are 1, 1, 0, 1, 1, and invalid strings are 0, 0. All these things are invalid strings. So what is the minimum one we'll create first? This 1. What is the minimum string? So Q0 to Q1 we create 1, right? And then again we can loop it over. So we see 1, 0, 0. All these things were 0, 1, right?
But again, what happens if an invalid string comes in here? So we will put that the invalid string 0 to again the q2. So again it will become a dead state. Then it will never become to the initial or the final state. So this becomes a dead state. So in this one, like that, 0 1, design a DFA that accepts strings such that it starts with 0 1 0, right? So if you are talking about 0 1 0, you talk about all the strings with 0 1 0. So 0 1 0, 0 0 1 0, double 0, like that. All the strings will go. Whatever the invalid strings, other than that 0 1 0 0, something like that. This all the strings will come which are invalid strings. So you create for the minimum string, that is 0 1 0. And for all the invalid string, if it starts with 1, you go to the dead state. If it is 0 0, it goes to the dead state. If it's just 0 1 0 1 1, it goes to a dead state. And rest again after that, all over the strings that comes 0 1. So this is a matter of practice. So this way, all that you have to, using different languages, you have to create. So using using different languages, you have to create different finite automatas. Okay. So now, so this is okay. So these are all the strings in here. So we will, so this lecture will continues, right? So again, how many? So I have already given you these lectures. So just go through them, and if you find difficulty, just let to me. So now we talk about the non-deterministic finite automata, right, or the NFA, right? NFA, what's the difference between a DFA and an NFA? NFA, for one single input, you can go to a single definite state. But in non-deterministic finite automata, there is no such restrictions. For 0 or 1 or more than one transition for input symbol, from which state you can go. That means you can go from one state to other without using any input also. So NFA is a five-tuple notation like the DFA, but the transition function is a little bit different. The DFA is Q into sigma generates another set from Q only, right? Another state from Q only. But NFA, when you get a state and you multiply by input symbol, and union that is the what you can call the lambda, that is empty string, it can go to any number of states, including no states at all. So in here we will talk about design an NFA which accepts lambda. So NFA without lambda transition, and this is NFA with lambda transition, right? So what happens in here? So design an NFA which accepts A. So Q0 it goes to Q1 A, right? So this is an NFA directly, right? We do not note this one. Now design an NFA that accepts strings. It starts with B, so it can be anything, right? B. So see, for again we see in here that for this state we did not define A. For A where it goes, so we do not have this restriction. Now again, if you are going to derive a DFA, then you have to specifically mention that for A, where does Q0 go to? Okay, so this thing goes on and on. So again, you may get questions. So this is actually a not regular language, ANBN. So again, you can design an NFA for this one. So for using 6 states, how much can go? So again, so 0 and 2 means the acceptance strings are AB. So A, B, you draw one. A, B, B, you can draw one. Using 5 states, again, you can just reverse it, this string, and you can go to this one, A, B, B. So like this, you can generate. So since this is not again a DFA, so you can stop in here, right? We don't have that restriction that we have to generate another state for a single input. Okay, 1 second. Okay. So this is how this conversion of language to DFA and NDFA work. If you have any issues, I have given you examples. So this is all the examples for converting a language to an NFA. So let us go to this part. Okay, language accepted by a DFA. So now the question comes to our mind, that how can you say that a given DFA is accepts a certain language, is whether it is accepting or not, right? So it's a language accepted by a DFA is set of all strings on sigma that is accepted by M, right? Now for what happened? Now from for a given language we are generating a DFA.
Now we have to verify it. Now we have to verify that whether the actual language is accepted by the DFA for any length of the string, right? So this is a informal notation. W belongs to sigma star. If Q0 comma W, this is a transition function. If you start from the initial state and the string length is W, it goes to the F. That is goes to the final state, right? Now transition function is Q into sigma is generates the Q. That is all the states must belong to the Q, and at least only one symbol should be there. Extended transition function more than one symbol. So we call sigma as a transition function. Sigma star is if the length of the string is greater than 1. Now for this particular DFA, whether we have to check whether AABA is accepted or not. So we put the AABA in here and we put the extended transition function. So I do sigma star Q1 ABA. Now see Q0 on A goes to Q1, so it will write Q1. This A is now consumed by the DFA. Now again later, what are the string let ABA? Now Q1 on A goes back to Q0, right? So we'll write Q0 comma BA. Now this A is considered, again we are getting B. B again it remains in Q0. So it remains in Q0 B. Q0 on A again goes to Q1. That is again it goes to Q0 on A goes to Q1, and we see Q1 belongs to final state. So we can say that the AABA is accepted. So if I write ABA again, for that one we see A, B, and it goes to back to A. Q0 is not a final state. So we say that ABA is not accepted. Now, when you're calling about the language accepted by an NFA without, see, this is very important, without lambda transition. That means it has no input symbol transition, right? So it is very easy. It is almost like the DFA only, right? So again, we see, so we have covered this part. Okay, so we are in this part, right? So again, when you're talking about this one, say check AAB is accepted or not. So it is very easy. AAB it goes to Q1 only, and it should be so. So there can be a number of final state, and if we have reached from Q1, so in this state you see for this part, right? Del star is a Q0W intersection F should not be a null state. That means the final state in here is Q1, right? And if we reach the final, if we reach a state which is intersection final state, that means it is not equal to null, then we say that the language is accepted by the NDFA. Now del star Q0 is equal to AAB, it goes to Q1 AB, Q1 B. Now Q1 intersection, we complete this intersection with the final state, so we see it is Q1 which is not equal to not equal to null. That means we can say that AAB is accepted. But whether B is accepted, we go to Q0B. Q0B, it is nothing given, so it is that is null. So null intersection Q1 is null, so B is rejected. So that is how the NFA works. So now again, when you're talking about the language accepted by a NFA with lambda transition, now this is a difficult part, right? Now what happens if a lambda transition? Because you see, if there is a lambda transition in the NFA and it has a link to the initial state, then the system can be in any kind of state. It can be in Q0 also, it can be in Q1 also, Q2 also. So we have to compute the lambda closure. So this terminology in here is very important. How to compute the lambda closure? So lambda closure states that given a state and in how many states you can go, even how many states you can go, given a what you can call lambda, given a empty symbol. So this is the formula generate initial state lambda star output. So first symbol of W. So again, you generate the output of the lambda star, you generate another output. So I'll just give you an example. And finally, it should be intersection when you have seen F, it should not be equal to null. Okay. So let us check this example Q0, Q1, and Q2. I'll just give you an example. Right. So we are in here. So for lambda, try to solve the lambda. Try to solve using lambda transition. Okay. Now this is the very important part. So we will just draw this string. Okay, I'll just this one. I'll just take the snipping tool. Sir, what is NFA? Non-deterministic finite automata. Okay, sir. NDFA, what I am saying, NDFA is actually NFA. Oh, yes.
Okay. So let us say I'm taking this one, right? I'm taking this example and just copy pasting in here. Okay. Now the system is the question is we have to compute the lambda closure. Where is the lambda closure? So I'll just draw this one. Right. What is the computer lambda closure? So we'll just do this one. So Q0, so 0, 1 is there, right? Q0, Q1, Q2. Okay, three states are there. Okay, so we will just do it like this one. Okay, so states input. So it will be another input should be there. So let us put this one in like this one. So 0 I put in here, 1 I put in here. I put this one lambda in here. And I put another symbol called the lambda closure. Okay, so this is an NFA, right? So let us say I'm putting Q0. Okay, so for 0, it goes to where? It goes to Q0 itself. Okay, for 1, it is goes to null, right? So I'll just writing this one. So null, null, null. I'm using this symbol, right? I'm using this symbol as a null. Okay. So again, if I'm putting as null, so again for now for lambda, where does it goes to? It goes to Q1. Okay. So we'll just put the 0, 1 and lambda all this in here, right? For Q1 again, we'll see. For 0, it will go to 1 second. Okay. For Q1, again, we see, is it audible? Okay, fine, it's audible. For Q1, again, we see for 0, it goes to null, right? We'll take this symbol. Okay. Now, again, for 1, again, it goes to Q1. Okay. But for lambda, it goes to Q2. Okay. Now, again, we take this Q2 again. Q2 on 0, it goes to Q2 itself. So Q2 is the final state, right? I'm making it, let us say, I'm making it red, right? Q2 again this one. Q2 on 0 goes to Q2. Q2 on 1 goes to the null state. Okay. Now again, when you're doing this one on lambda, again, it goes to, again, null state only. Okay. Now how to compute the lambda closure? Now this one comes the important part. So let us say Q0, what I am doing in here. So Q0
So every state on lambda, whether you have a lambda symbol or not, it always goes to itself first, right? So Q0 will be always there, right? Now Q0 union on lambda, where it goes to? So it will be union Q1, right? Again, we have to see on Q1 on lambda, where does it go to? It goes to Q2. Okay. So again, Q2 on lambda goes to null. So in here we stop. In here we stop. When you receive the that's the null state, we stop. Okay, now this one is done. This is the lambda's closure of Q0. Now again for Q1 you can do. Q1 always on state, always goes to itself first. Q1, now let us say union. Now on lambda it goes to Q2. Very good. But again Q2 on lambda goes to null. So we stop in here. So this state is only Q1 comma Q2. So Q2 in here only goes to itself. So we stop here. So lambda's closure is computed like this fashion. Is it understood? Is it understood? Okay. I think it is understood, right? So let us go into this one. So Q0, Q1. So this is how the lambda closure is computed. So now again we see that let us take a string, right? Let us take a string. Check whether 0, 1 is accepted or not. So now we will take the help of the table. So check for 0, 1. Check for the string 0, 1. One second, please. Okay. Now let us see this one. Is it audible? I'm audible, right? Hello. I'm audible, right? Yes, sir. Have you understood the lambda closure part? जी जी जी. अच्छा चलिए ठीक है. So again let us say for this check for 0, 1, right? Now we see that Q0 देखिए 0 तो आएगा बाद में. 0 में वो कहाँ जाएगा? Q0 में जाएगा. लेकिन Q0 से बाद में कि लैम्डा में कहाँ पे जा रहा है? ये सारे में जा रहा है. दैट इज Q0 से Q1, Q0 में भी जा रहा है, Q1 में भी जा रहा है और Q2 में भी जा रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला चीज किया है. दैट इज Q0 और लैम्डा स्टार में Q0, Q1, Q2 तीनों में जा रहे हैं. अभी हम लोग ये जीरो पार्ट पे यहाँ पे आ रहे हैं. सो लेट अस से Q0 ये जब लैम्डा क्लोजर हो रही है तो ये सारे कहाँ कहाँ पे जा रही है? लैम्डा क्लोजर को हम लोग पहले जगह ढूंढ लेते हैं, तो इसे हम लोग जस्ट कॉपी कर लेंगे. ठीक है. अब उसके बाद हम लोग अगर इनपुट लगाते हैं 0, ठीक है, तो ये 0 पे कहाँ पे जा रही है? तो यहाँ पे जा रही है Q0, Q2 में. Q0 on 0, Q0, Q1, Q2 ये तीनों लेंगे अगर हम लोग. और ये 0 में कहाँ जा रही है? Q0, Q2 में जा रही है. ठीक है. अब इसका हम लोग फिर से लैम्डा क्लोजर लेंगे.
ठीक है, लैम्डा क्लोजर लेते Q0 Q2 का लैम्डा क्लोजर लेते तो क्या होता है फिर से, ये फिर से Q0 Q1 Q2 आता है। ओके, तो अगर इसका लैम्डा क्लोजर ले लिए उसके बाद ये फिर से कहां पे जाएगा, अभी हम लोग ये वाला इसको लेंगे, दैट इज वन को लेंगे, वन को ले लिया। अब ये वन पे कहां पे जा रही है, ये Q0 Q1 2 वन पे कहां पे जा रही है, Q1 पे जा रही है। ठीक है, और Q1 का फिर से अगर हम लोग ये ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे होगा Q1 का अगर हम लोग लैम्डा क्लोजर लेते हैं तो ये कहां पे जा रही है, तो ये जा रही है दैट इज Q1 Q2। तो ये फाइनली यहाँ पे पहुंच गई, Q1 Q2 ये यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, अब Q1 Q2 का अगर हम लोग इंटरसेक्शन ढूंढे, सो लेट अस टेक द इंटरसेक्शन। सो अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले ले, सिर्फ इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन क्यू किसके साथ लेंगे, Q2 के साथ लेंगे। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये Q2 मिला, है ना। तो विच इज नॉट नल, दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, 0 1 इज एक्सेप्टेड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया लैम्डा ट्रांजिशन किस तरह काम करता है। जी 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 सर। ओके फाइन, तो अभी हम लोग इसमें चलते हैं। तो ये हो गया हमारा, तो ये आप बाकी वाला आप कम पढ़ लीजिएगा। ये 1.12 गया, 1.13 में आते हैं। हम्म, अच्छा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं इस वाले पार्ट में। एक एक चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे लिखना था हमें, इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए। तो ये वाला पार्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एनडीएफए टू डीएफए करेंगे, है ना। मतलब कोई भी एनडीएफए का एक डीएफए फॉर्मेट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। सो ये वाला लैम्डा क्लोजर आप लोग कैसे ढूंढेंगे आपको पता जा गया, है ना। तो व्हाट इज द कंसेप्ट, डज इट से एवरी एनएफए इज अ डीएफए, इट इज फॉल्स। एवरी डीएफए इज एनएफए, दैट इज ट्रू। So power of DFA is equivalent to that is NFA, right? It is equivalent to NFA. तो हर एक NFA का एक DFA होता है ना। So we will now try to convert a NFA to a DFA without lambda transition। पहले हम लोग देखिए lambda transition जब भी होता है तभी एक मुश्किल होता है। पहले हम लोग विदाउट lambda transition देखेंगे, उसके बाद विथ lambda transition देखेंगे। सो कन्वर्ट, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज द टेबल्स, वी हैव टू यूज द टेबल्स, दैट इज कन्वर्ट एनएफए। सो हम लोग क्या बोलते हैं, एक हमें, सो वी गेट ए एनएफए ट्रांजिशन टेबल एंड फ्रॉम दैट एनएफए ट्रांजिशन टेबल वी क्रिएट द डीएफए ट्रांजिशन टेबल। दैट इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सो फर्स्ट वी क्रिएट द एनएफए ट्रांजिशन डायग्राम, right, and then we create a DFA transition table as follows, that is the initial state of DFA is equal to the initial state of NFA. Now what we do, compute the lambda sigma, that is delta, that is initial state comma symbol is equal to the output state। ठीक है, ये हम लोग एक पहले हम लोग एक NFA बना देते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। तो ये एक हमारा NFA है, ये एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। बोलिए इसका ट्रांजिशन टेबल कैसा होगा।
देखिए ए बी है ना, तो हम लोग और कितने ये है, 3 है तो 4 होंगे। अच्छा एक हो गया, चलो इसको हम लोग लगा देते हैं, वी विल मेक इट सेंट्रलाइज्ड। Okay, so this is A and this is B. Okay, so A on AB, where does it go to? Well, on A, where does it go to? It goes to both A, comma B. ठीक है। और अगर अगर हम लोग अगर सिर्फ अगर फॉर बी, अगेन ये कहाँ पे जाती है, ये सिर्फ ए में जाती है ना। अगेन फॉर बी, बी ऑन ए बी, इट गोज टू सी ओनली, सी, and C does not go to anywhere. So C does not go to anywhere. C does not go to anywhere. इसका तो बनाना बहुत आसान है। So without, जब ये without lambda transition होगा, it is very very easy, right? NFA. So we create a DFA gradually. तो अगर हम लोग इसका DFA बनाएंगे तो कैसे होगा? तो हम लोग पहले वाले इनिशियल स्टेट को लेंगे। सो दिस इज आवर इनिशियल स्टेट। ओके, एंड लेट अस मेक दिस एज रेड। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट को हम लोग ले लेंगे और बाकी सबको मिटा देंगे, और सबको जो भी इस इनपुट सेट में जा रही है उसे हम लोग ब्रैकेट्स में डाल देंगे। विल पुट देम इन द ब्रैकेट्स। Okay, so now it is becomes very easy. So we take every new state that it goes to, where every state that it goes to, we take a combination of the collection of these states and we call it a new state. So this becomes a new state, and this is what you can call as a old state. So we do not repeat the old state, but we create the new table using the new state. So AB goes in here. Okay, now when AB goes to the in here, so अगर AB A में कहाँ पे जा रही है, तो ये हम लोग नया स्टेट में जाएंगे, that is A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, AB B में कहाँ पे जा रही है, AB B में जा रही है A और C में। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से नया स्टेट मिल गया, ABC मिल गया और AC मिल गया। ABC कहाँ जा रही है, so ABC on A, it goes to again ABC back। ठीक है, and ABC on B, it goes to AC। और फिर से अगर हम लोग AC को ले, so AC on A, it goes to AB। ठीक है, and AC on B, it goes to only A, it's a old state। तो ये दोनों ओल्ड हो गए हमारे, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। ओके, A is also old, so we are not creating any new state। ठीक है, so this is how this thing works। तो ये वाला देखिए, ये हम लोग यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे तो ये वाला हो गया, तो A is our initial state। Then what is our this one final state? So wherever C is there, so this becomes one final state and this becomes another final state। Okay, but things again get complicated when you are using NFA to DFA with lambda transition. This then things become complicated।
अब बताइए क्या होगा. Now the things get complicated. Why it gets complicated? Okay, so we stop in here. So again, when you're talking about a lambda transition, then why it gets completed, we have to compute the what you can call the lambda closure. So initial state of the DFA is the lambda closure of the initial state of the NFA. And whenever you're taking an initial state comma symbol, we have to compute the output, and then again we have to compute the lambda star or the what you can call lambda closure of the output. If output state is a new state, then the new state will become the next input state. Repeat step 3, still next new states are appearing. Whenever final state is written in NFA, if that is also present in DFA, then the state will become a final state. Okay, so convert the DFA transition table into transition diagram. Okay, so wherever this lambda closure is there, then it becomes a little bit trickier. So again, if you're taking this one, so let us take this inclusion. Okay. Okay, so this is our diagram. Okay, is it okay? Yeah, it is okay. So let us now again we have to create the two tables, right? So one table is this one. Now we have to create the lambda closure table. So let us say one state, how many inputs are there? Two, lambda and lambda closure. And how many states are there? Three states, that means 1, 2, 3. Okay, so this is our entire. Okay, this is our NFA. States are 1, 2, 3. 2 is our what you can call the final states, right? And 1 is our initial state. तो वही हम लोग फिर से वही दोहरा रास्ते पे आ गए. So we came to the again the same stoppage, the same road. Okay, A, right? And again then this one is B, and again this one is the lambda. We'll just copy it from here. Okay, बताइए, anybody who can volunteer? Anybody who can volunteer? बताइए, where will it one on A will go to? 3, sir. On A it will go to 3, correct? On B it will go to 0. null, I think. Null, right? Null. Just copy it in from here. Right, we got it in here. Now on lambda, where does it go to? 2. Sir, we 2, have to write correct? null or 0. Null, null, null. There is no 0. 0 becomes another state, right? Okay. अब बताइए, अच्छा, now 2 के लिए बताइए. 2 on A will go to 1. 1. 2 on B will go to Null. 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 Now 2 on lambda will go to Null. 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 Okay. Now 3 on A will go to 2. 2. 2. Okay. Now 3 on B will go to, 3. on B 3 will and also go to itself. It will go to both 2 and 3, right? So I'll write in here 2 comma 3. Okay. And again lambda it will go to null. null. Okay. Lambda closure बताइए 1 का. It is 1 itself, right? It is 1 itself. कोई lambda एक ही अपने के लिए है.
नहीं नहीं, वन से वन और टू में जाएगी ना, सो वन और वन के लिए और वन के साथ टू में जाएगी। करेक्ट, टू और फिर से लैम्डा कहीं पे है, नहीं है। ओके, नाउ टू ऑन टू अगेन इट विल गो टू इटसेल्फ ओनली, बट लैम्डा में देखिए नल है तो टू सिर्फ टू में ही जाएगी। सो थ्री विल गो टू ऑन, इट विल गो टू थ्री इटसेल्फ, so I will go to three only, right? Now the question is that how to create the DFA. Now DFA में देखिए, there will be three step, there will be gradually developing the DFA, one step at a time, but the inputs will be fixed two, so it will be, so tables will be one two three, like this it will go on, right? So I'll just write this one like this. Okay, so this is our DFA. Okay, now this is our A and this is our B. तो इनिशियल स्टेट कौन सा होगा इसका, व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेट ऑफ द डीएफए, इट विल बी द लैम्डा क्लोजर ऑफ द इनिशियल स्टेट, द लैम्डा क्लोजर इज 1 2, करेक्ट, अंडरस्टूड दिस वन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओके, क्रिएट द डीएफए ट्रांजिशन, इनिशियल स्टेट ऑफ द डीएफए विल बी द लैम्डा क्लोजर ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द एनएफए, अंडरस्टूड दिस वन। Okay, sir. ओके, अंडरस्टूड दिस वन। ओके, अब देखिए जब कंप्यूट करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेट और सिंबल क्या है, उसका आउटपुट निकलेगा, फिर आउटपुट स्टेट का हमें लैम्डा क्लोजर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का अगर वन टू है, वन टू ए में कहाँ पे जा रहा है, वन और थ्री, ठीक है। वन और थ्री का अभी हमें दिस वन हमें इसका ये निकालना पड़ेगा, लैम्डा क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो वन और थ्री का लैम्डा क्लोजर क्या है, वन का लैम्डा क्लोजर क्या है, वन टू है, ठीक है, और थ्री का लैम्डा क्लोजर क्या है, थ्री है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा क्लोजर वन टू और थ्री। समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, आवाज कट गई थी। अच्छा ठीक है, वन और टू का ए पे कहाँ पे जा रहा है, वन और थ्री में जा रहा है, मैंने लिख दिया। वन और थ्री का लैम्डा क्लोजर क्या है, वन का है वन टू, और थ्री का है थ्री इटसेल्फ, सो इट विल गो टू वन टू थ्री, यस सर। ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, देख लेना सही है। देखो वन टू थ्री है ना। अब देखिए वन टू का बी में क्या है, वन टू का बी में है नल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सिर्फ हम लोग यहाँ पे नल का नल क्लोजर क्या है, बस यहाँ पे हम लोग लिख देते, लेकिन ये भी एक स्टेट हुआ, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल्सो ए न्यू स्टेट, सो विल कॉल दिस ऑल्सो अ न्यू स्टेट। अभी हमें वन टू थ्री का निकालना है, बताइए वन टू थ्री कहाँ पे जाएगा, ए के लिए कहाँ पे जाएगा, तो 1 to 3 में ही जाएगा। तो ये वन टू थ्री में जाएगा। वन टू थ्री बी के लिए कहाँ पे जाएगा, 2 3 टू थ्री में ले जाएगा। टू थ्री का ये क्या है, लैम्डा क्लोजर क्या है, 2 3 3. ठीक है। एक हमारा एक नया स्टेट आ गया, देखिए डेड स्टेट को भी हम लोग यहाँ पे एक नया स्टेट बोलेंगे, तो डेड स्टेट सिर्फ डेड स्टेट में ही जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टू थ्री आ गया, देन टू थ्री ऑन ए विल गो टू वेयर, 1 2 वन टू का फिर से लैम्डा क्लोजर क्या है, 1 2 ओके। और टू थ्री बी के लिए क्या है, 2 3 इटसेल्फ,
ठीक है, अब इसमें नया स्टेट हमारा कौन सा है, ये 1 2, लेकिन 1 2 नया स्टेट नहीं है ना, ये ऑलरेडी हम लोग के पास पहले से है। 1 2 इज वन दिस वन एंड 2 3 इज दिस वन। ठीक है, तो हमें एक नया डीएफए मिल गया क्या, तो ये हमारा नया डीएफए है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं रिजल्ट के साथ। ठीक है, ये हमारा नया डीएफए है, और हमारा ये कौन सा है, व्हाट इज आवर दिस वन, तो इनिशियल स्टेट भी ये होगा, फाइनल होगा, ये वाला भी फाइनल होगा क्योंकि 2 इसमें है, और ये वाला भी फाइनल होगा। नॉन फाइनल स्टेट हमारा सिर्फ ये वाला रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, इज इट अंडरस्टूड। तो समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड। यस कहीं कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन इज देयर। सर, अगर नया कोई स्टेट ना आया या फिर नया टर्म नहीं आया तो नो, तो वहां पे बंद कर देंगे, वहां पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बंद कर दिए, ये वाला भी ओल्ड है, ये वाला भी हमारा ओल्ड है, तो यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे। ओके फाइन, सो नाउ वी कम एक्चुअली द डीएफए मिनिमाइजेशन। ओके, डीएफए मिनिमाइजेशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, इज इट ओके। श्योर सर। ओके सर। और मैं हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 तारीख तक कंटिन्यू करने के लिए। 1 तारीख को मैं आपको क्विज दे दूंगा, वो 10 मार्क्स का होगा, है सभी को 9 या 10 मिल जाएंगे। क्विज विल बी इजी, डू नॉट वरी, ठीक है। ओके सर। यस ओके सर। फाइन, सो क्लोजिंग दिस वन। कल सुबह क्लास लेने से चलेगा, सर हाँ कितने सर, बजे? ठीक है। सुबह अराउंड 12, नहीं सुबह तो नहीं होगा, 12 से 1 बजे। श्योर सर। यस सर। ओके ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा, है ना, ये वाला थोड़ा सा स्लो गया, थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा। ठीक है, अभी ये सारे आसान हो जाएंगे। ओके।